welcome to our mathematics class, that is maths with शिवांगी नागर मैम। स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था, सरफेस एरिया वॉल्यूम्स में 3 सॉलिड शेप्स हमने इंक्लूड किए थे। दे आर क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, एंड उनके हमने सरफेस एरिया वॉल्यूम्स ये सब स्टडी किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, सो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन सी दैट ऑल्सो। एंड एज पर द डिस्कशन इन द लास्ट लेक्चर दैट in the next class we will do the questions basis on the surface area and volume of the cube, cuboid and cylinder first। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। NCERT टेक्स्ट बुक हम आज डिस्कस करेंगे। So we will start with the 13.1 exercise question number 1। So let's get started। The first question is, what about a plastic box having the measurement 1.5 meter long, 1.5 meter wide and 65 centimeter deep। अब जो हमें क्वेश्चन में यहाँ पे ये जो 3 डेटाज दिए हुए हैं, इससे क्वाइट ऑब्वियस हो गया है कि ये जो हमारा बॉक्स है ये कौन सी शेप का है। सो इट इज़ इन वाटर, इट इज़ इन द क्यूबॉइडल शेप, बिकॉज हेयर वी आर गिवन दिस एज लेंथ, this wide means it is breadth of that cuboidal box and deep means it is the height of that cuboidal box. Now if you see here the length is given in meter, breadth is given in meter, but if you see the height, deep means height, the height is given in the centimeter। So I suggest you कि जब भी इस तरह से आपके पास मेंसुरेशन में क्वेश्चंस आए, राइट, एंड इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट आइदर द वॉल्यूम और द एरिया, राइट, तो सबसे पहले आप सारी जो जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनको एक सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लें, एज वी हैव डन हेयर ऑल्सो, राइट। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन से हमने क्या प्रोडिक्ट किया कि ये जो प्लास्टिक बॉक्स है, इट इज़ इन विच शेप, इट इज़ इन द क्यूबॉइडल शेप, बाय विच डेटा, बाय दिस 3 डेटा। नेक्स्ट व्हाट वी आर गिवन, इट इज़ ओपनड एट द टॉप, ignoring the thickness of the plastic sheets, determine the area of the sheet required for making the box, and second thing, the cost of the sheet for it, if a sheet measuring 1 meter square cost is ₹20। हमें यहाँ पे बोला गया है कि ये जो हमारा क्यूबॉइडल शेप का बॉक्स है, इसका जो टॉप वाला पार्ट है, it is not there। That means all the 4 lateral surfaces are there and the base part is there, but the top part is missing here, right? And I want to cover that box with a very beautiful wallpaper, like you can say that a very beautiful gift paper से मुझे उसको रैप करना है, ठीक है। रैप करने के लिए फर्स्ट व्हाट आई हैव टू डू, मुझे मेजरमेंट्स लेने होंगे कि एक्चुअली मुझे मार्केट से कितना पेपर बॉट करके लेकर आना है ताकि मैं उस बॉक्स को अच्छे से कवर अप कर सकूँ। तो वो चीज़ हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी। तो अब जो हमारा पूरे क्यूबॉइडल शेप बॉक्स का जो एरिया होगा, ठीक है, उतना ही एरिया का हमें क्या लाना पड़ेगा, हमें मार्केट से बाय करना पड़ेगा, उतना ही हमें क्या, पेपर, राइट। सो हाउ वी विल कैलकुलेट दैट, सो सिंस वी कैन सी देयर length is 1.5, breadth is 1.25 and height is given 65 centimeter। So first we have to convert this into meter, because the rest two quantities are given in the meter, and we all know that 1 meter is equals to 100 centimeter, right? So if we have to convert the centimeter into meter, then we have to what? We have to divide it by the 100। So the same thing I have done over here, I have divided this 65 centimeter with the 100। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 65 अपॉन को जैसे 100 से डिवाइड किया, तो it is converted in the unit meter, and this can also be written in the decimal form as 0.65 meter, right? So all the 3 data of my cuboidal shape box. Let's draw the box over here. Cuboidal shape box is this, where this is my length, and how much length is, we have 1.5 meter, right? And what is the breadth? So this is the breadth. The breadth given to us is 1.25 meter, and what is my height? My height is 0.65 meter, right? Now to calculate it, how much area of sheet I required, so we know that it is given in the question that the top is open. That means we are not required to cover the top part because top is missing.
So what is the total surface area required? The surface area which we required is, we can say, the curved surface part, that means the lateral surface part and the base part. यही चार surfaces और जो base part होगा इसी को cover करना होगा, तो इन दोनों का area ही हम consider करेंगे. Now what is the curved surface area? So in the last class we have studied the curved surface area of the cuboidal shape is what? Twice of L plus B into H. And what is my base area? So if you see here, this is my base part. Okay, the bottom part is my base part, and the base part is in what shape? It is in the rectangular shape. और जो rectangular shape है उसके dimensions क्या क्या होंगे? So L and the breadth, right? So I have written the base area, that is L into B here, right? Then from here I have put all the quantities units. लेंथ कितना है 1.5, ब्रेथ है 1.25 एंड एच है 0.65. So from this part I have put all the respective values. Then I have calculated it. Now how I have calculated it? See, 2 into 1.5 plus 1.25 ये दोनों का सम है और फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपकी हाइट 0.65 से. तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को ऐड करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे एज पर दी बॉड मास रूल. सो 1.5 इंटू 1.25 इज व्हाट? 2.75 एंड 2 and 0.65 आई हैव रिटन एज इट इज ओवर हियर. द सेकेंड थिंग इज एल एंड बी का वैल्यू यहाँ पे पुट किया, इसको मल्टीप्लाई किया हमने. सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग बोथ द क्वान्टिटीज व्हाट आई गॉट हियर 1.875. क्लियर? देन अभी ये क्या है? अभी ये दो टर्म्स में डिवाइडेड है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन तीनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे. सो ऑन मल्टीप्लाइंग ऑल दीज थ्री क्वांटिटीज़ व्हाट आई गॉट हियर 3.575 meter square and this is what 1.875 meter square. Now from where this meter square comes out? So see here, this is L and this is B. Length is also in meter, breadth is also in meter. So meter into meter gives you what? Meter square. And students always remember that your perimeter unit is what? It is in the एनी मेजरिंग लेंथ मेजरिंग यूनिट, बट पावर हमेशा क्या होगा पेरीमीटर में 1, एरिया में क्या होगा पावर 2 एंड वॉल्यूम में पावर होगा 3. सो सिंस हेयर ऑल द मेजरमेंट्स आर इन द मीटर एंड सिंस वी आर कैलकुलेटिंग द एरिया हेयर, सो एट लास्ट हमारा जो यूनिट आना चाहिए दैट यूनिट मस्ट आउट टू बिकम अवॉट इन द मीटर स्क्वायर फॉर्म, राइट. अब लास्ट में हमने सिर्फ इन दोनों को ऐड किया है. सो आफ्टर एडिंग दिस व्हाट वी गॉट हेयर 5.45 मीटर स्क्वायर. यानी हमें जो उस रेक्टेंगुलर बॉक्स को कवर करने के लिए, राइट, उसको कवर करने के लिए जो हमें मटेरियल चाहिए, जो हमें शीट रिक्वायर है, वो कितने एरिया का शीट रिक्वायर है? दैट इज़ 5.45 मीटर स्क्वायर. अब एरिया हमारे पास आ चुका है, तो हमारा फर्स्ट वाला जो पार्ट है दैट वी हैव सॉल्व्ड. नाउ व्हाट द सेकंड क्वेश्चन सेज द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ़ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20. कि बताओ कि अब आप चलो मार्केट में गए, आपने कैलकुलेट कर लिया कितना एरिया का आपको शीट चाहिए, राइट. तो अब आपको कितना पॉकेट में मनी लेकर जाना होगा उस शीट को बाय करने के लिए, राइट. तो अब वो कैसे करेंगे? आपको ये आइडिया है कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है दैट इज़ ₹20. यू हैव दी टोटल एरिया कि आपको टोटल एरिया का कितना शीट चाहिए, ठीक है. तो अगर पर यूनिट का कॉस्ट पता है, टोटल एरिया पता है, तो जस्ट इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस टोटल एरिया विद द पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट, तो क्या आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा. इसको आप ऐसे लीजिए, राइट. आपको चाहिए यू नीड टू बाय 20 चॉकलेट्स, 20 डेयरी मिल्क यू वांट, ओके, एंड यू नो दैट एवरी डेयरी मिल्क कॉस्ट ₹10. So now you have a brief idea in your mind that how much amount of money you need to put in your pocket. How you will calculate? You just multiply the number of chocolates with the per unit cost of the each chocolate, right? That means 10 into what? 10 into 10. So that means you need to put in your pocket ₹100. It is as simple as that. तो यही चीज़ हमने यहाँ पे किया है. क्या किया है? We know the total area.
वी नो द पर 1 मीटर स्क्वायर की 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसका कॉस्ट है 20 रुपीज़, तो आपने जस्ट क्या किया, मल्टीप्लाई किया. तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट इज ₹20 एंड द टोटल कॉस्ट वी नीड टू फाइंड आउट, दैट मीन्स व्हाट, 5.45 मीटर स्क्वायर की जो शीट है उसकी कॉस्ट कितनी होगी. तो क्या कर दिया, पर मीटर की कॉस्ट से हमने उस एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया. सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दैट व्हाट वी गॉट ₹109. क्लियर. सो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी हमारा रेडी है, दैट इज वी नीड टू पुट इन आवर पॉकेट 109 रुपीज़. नाउ दिस इज द लास्ट आंसर लाइन. नाउ स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना जब भी आप एग्जामिनेशन में आप आपके आंसर्स लिखेंगे, दीज टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स, जब भी आपसे कोई क्वांटिटी पूछी जाती है, सो ऑलवेज रिमेंबर आपको लास्ट में ये आंसर लाइन ज़रूर लिखना है. जो आपसे पूछा गया है दैट दिस इज़ कॉल्ड द आंसर लाइन, तो ये आपको ज़रूर लिखना होता है. ठीक है. सो आई हैव रिटन हेयर एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बॉक्सेस 5.5 meters square and the cost of the required sheet is ₹109. So just note it down, then we will discuss the next question.